Okay, so fine. So we will first of all we'll take this question. Okay, before I move ahead. Okay, to discuss about the important examples of vector space and subspace, as well as you know I'll talk about important concepts like linear combination of vectors. Okay, these are very important concepts, guys. These are the heart of linear algebra. So let's talk about this question. This question was directly from my notes only, GATE 2023, right? In electronics paper, and you have to understand this. See, first option will never be correct. That is for sure, right? And I have given it to prove also. So this question belongs to the similarity of matrices. Okay, similarity of matrices. Okay, the topic which I have discussed. Okay, so you guys can make correction. Okay, you guys can make correction because in hurry I accepted the answer as well, and I did not prove it. Okay, so let the set of eigenvalues and eigenvector of the matrix B, B has a eigenvalue lambda k, okay, ranging from 1 to n. Hi Chatri, good morning. And Vk is the eigenvector. Okay, it is ranging from 1 to n. Again, you can see respectively for any invertible matrix P. Okay, the sets of eigenvalues and the eigenvector of the matrix A, where B is given, right? So you have to understand that we have to find the eigenvalues and eigenvector for the matrix A, not matrix B, right? जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था कि कोई भी मैट्रिक्स बी है उसको अगर आप यू नो if you are able to write in terms of P inverse A and P, okay, let me recall that. Okay, in the session, okay, in the session what I have given you, right, is suppose any matrix B is there, right? If it can be written as if you multiply any, suppose this is a matrix A, to the left you multiply P inverse and to the right you multiply P. Okay, so this is known as similarity of a matrices. You can say that A matrix and B matrix are similar to each other, right? तो आप, मैंने बोला था कि अगर A के पास लैम्डा आइगन वैल्यू है, सपोज A हैज लैम्डा आइगन वैल्यू, B हैज suppose A has lambda eigenvalue, and you can say X is the eigenvector, right? So B will be having lambda eigenvalue and P inverse X will be the eigenvector of B, right? Okay, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि yesterday that day also I was when I asked which option is going to be correct, then I was thinking ki, okay, there is a fight between C and D, but I accepted immediately, right? The D is gonna be correct, but D is not correct, guys. Okay, because D will be correct only when they are asking what is the eigenvalue and eigenvector of B. Okay, when eigenvalue and eigenvector of A matrix is given. So please correct this, because we can't modify in that session, so you need to correct it. Okay, so let the sets of eigenvalue eigenvector be this. Okay, so what we can do here is what is given, first of all we need to prove it. Okay, so let me eliminate first of all, this will never be correct, this will never be correct. Okay, and this will never be correct. Okay, keep in mind this, D will never be correct. Okay, for this question. Okay, because they are asking what, यहाँ पर वो लोग क्या पूछ रहे हैं, they are asking about the sets of eigenvalues and eigenvector of the matrix A. तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, सबसे पहले the B is given, you see here the B is given as P inverse A times P. Okay, so it is ensuring that they are talking about similar matrices, right? अब आपको याद होना चाहिए कि they have given what, lambda. Okay, you see here B has eigenvalue lambda. Okay, so you can say that B Vk is equal to what, lambda Vk, right? This you know from Ax equal to lambda x, आपको ये पता है, right? अब आपको क्या करना है यहाँ पर, you have to make this B. Okay, you have to make this B. Okay, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा to the left and to the right. Okay, to the left and to the right. Okay, so you can put this B matrix first. तो आप B matrix यहाँ रखते हो, B matrix क्या है यहाँ पर, P inverse
AP times VK equal to lambda times VK, right? Okay, I hope this makes sense to you, right? Now how can you take away this P inverse? Okay, so what you can do, you can multiply to the left P. Okay, so P से अगर आप multiply करवाते हो तो P inverse AP times VK equal to lambda P VK. Okay, now you know that this is nothing but identity matrix, right? So आप इसको I से replace कर सकते हो कि just write like this, AP VK equal to lambda times P VK, right? ये देखो, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि lambda is the eigenvalue of A and the eigenvector of A is what? Eigenvector of A is nothing but P times VK. So Akshay and both of you understood this, where we had done like kind of I did not prove it. Okay, immediately we got the answer, right? So option C is gonna be correct for this. Okay, please remember this, and this was very good question straight from our concept what we have discussed. समझ आया क्या ये चीज? जल्दी बताओ. So the proof also I have given, right? I have given two theorems. Okay, so please correct this, no problem at all, right? We commit mistake and we correct it. That is the fun in app preparation, right? तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए. जब भी आएगा तो याद रखना, आप अपना थ्योरम याद रखो पहले. थ्योरम इज दिस इज द थ्योरम आई हैव टोल्ड यू, राइट? सपोज b इक्वल टू if you take any matrix A, to the left you multiply P inverse, to the right you multiply P, right? So that matrix should be what? The B matrix. Okay, and you can say that B and A are similar matrices, और A के पास if A has lambda and the eigenvector is X, so B will be having lambda and the eigenvector will be P inverse X. You can prove it. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, थोड़ा ट्रिक है, राइट? तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि they have given B has a lambda and eigenvector is VK, right? So they are asking about what will be the they have given the similarity definitions, right? And they are asking about what is going to be eigenvalues and eigenvector for the so this question can be done like this. Okay, fine. So, and I was talking about one more question. That question I said that from theorem 2, right? From theorem 2. Okay, what was theorem 2? That you can look here, right? So yeah, which of the following statements are true? Okay, so suppose these two statements are given and you have to explain it whether these are true or not. So you can take it like a homework as well. Theorem 2 I have told you that theorem 2 can be asked, because जो theorem 2 अभी तक आया नहीं है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या यहाँ पर है? If A and B are the similar matrices, then 2A cube plus A minus 3I and 2B cube plus B minus 3I are similar. तो आपको मैंने बताया था characteristic polynomials will be similar, right? Characteristic polynomials are similar. If A and B are similar means characteristic polynomials are similar. So you can prove it. Okay, और यहाँ पर सेकंड जो दिया है, if A and B are 3 by 3 matrices with eigenvalue 1 0 -1, then A and B are similar. So ये क्वेश्चन आप कर सकते हो as a homework, right? So I'm just giving you as a homework. I will explain the solution in the next class, right? So आप इसको नोट कर लो. ठीक है, if you're not able to see, I can turn off this video so you guys can note down. Yeah, nothing is hidden, right? So yeah, ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लेना. Let us move to vector space and subspace. तो आज के सेशन में हम लोग एग्जाम्पल्स पहले देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे. ठीक है, तो अब जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ वेक्टर स्पेस एज वेल एज द सब स्पेस, राइट? So what are the examples which we need to see? Okay, example number 1. See, in the gate examination question कैसे आएंगे वेक्टर स्पेस सब स्पेस पे? They will give you the some of the sets and they will ask you whether this is a vector space or not. तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट? तो आपको याद रखना है कि what are the basic requirement Dheeraj sir has told you, right? The closure property, okay,
like you can add two vectors, okay, after addition that resultant vector should stay in the same space. तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। मैंने बताया था कि अगर मान लो होल नंबर है, if you add two whole numbers after addition, that should be the whole number. What is the meaning of that? That should be that addition should be closed, okay, the whole number should be closed under addition। उसी का यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि अगर दो वेक्टर को ऐड करते हो, that vector should belong to the same vector space, ठीक है। अगर मान लो u वेक्टर है, that vector belong to one vector space, v belong to a vector space, तो u plus vx should also belong to vector space, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको बार बार अगर आप सेशन देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, लेट मी टेक दैट एग्जांपल एज वेल। सो एग्जांपल इज लाइक सपोज आपके पास लेट कोई वेक्टर स्पेस है v, okay, r to the power n, right? This is a vector space v r to the power n, okay, be the set of okay, be the set of all ordered n tuples, right? N tuples, okay, we sometimes number of components are also known as n tuples, right? यहाँ पर n ये क्या शो कर रहा है, n tuples, okay, remember n tuple, okay, so you don't have to worry about that, there are n number of you know, you can say, right? So v equal to r to the power n be the set of all ordered n tuples, okay, like a1 a2, okay, and so on an. And what are these an? Okay, they are the real numbers, okay, they are the real numbers. You can say that you know, ai belongs to the real number, right? Okay, so now they are asking whether this is a vector space or not, okay. They have given the family of numbers here a1 to an, right? We call it n tuples, right? Set of all ordered n tuples, okay. Now they are asking whether this is a vector space or not. So how can you prove? You have simple criterion, right? So you take these numbers, you add it, okay. नंबर को प्रूव करना तो बहुत सिंपल है, राइट? आप समझ सकते हो कि ये रियल नंबर है, मतलब क्या, रियल नंबर मींस आफ्टर एडिशन इट शुड सेटिस्फाई, सिंपल, राइट? आफ्टर एडिशन इट शुड सेटिस्फाई, ठीक है। तो अगर आप एक यू जस्ट टेक a1 a2 an, right? If you add a1 plus a2, okay, and so on, or you can say you take a1 and b1, right? Okay, so what we can do here is if you want to prove here, मान लो तुम ले लो a1 a2 and an, right? इसको ऐड करते हो किसी दूसरे यू नो n टपल से, राइट? एंड that is b1 plus b2 and so on plus bn, right? Okay, please keep this in mind. And this b1 and bi belongs to real number only, right? I mean that belongs from the same vector space, you can say, right? तो इसको जब आप ऐड करते हो तो that should be in the same vector space, you can say a1 plus b1 a2 plus b2, right, and so on an plus bn, right? तो नंबर को प्रूफ करना इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, राइट? ये नंबर दिया हुआ है, आप समझ सकते हो कि लेट v is r to the power n be the set of all ordered n tuples। तो आपके पास एक ऑर्डर दिया हुआ है and all ordered n tuples is given a1 a2 family of numbers are given, they are real numbers। You just take that real number, you take another real number, you add it, okay, so that should be the real number only, that's it, okay। That is the criterion that you have to keep in mind। Now let us take, if you multiply lambda, okay, with these n tuples, okay, तो अगर आप lambda से मल्टीप्लाई करवाते हो a1 a2 an, that should be lambda should be multiplied to each, and that whatever you will get, okay, all whatever set you will get, that should also belong from the real number only, okay, real set, lambda a1 lambda a2 and so on lambda an। So I think this is clear that lambda belongs to the real number, that you have to keep in mind। ये वेक्टर स्पेस हो सकता है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट यू कैन गिव, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। एक बेसिक लैंग्वेज में क्लास 8 में दिया हुआ है। मान लो अगर आपको प्रूफ करना है कि रेशनल नंबर
क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। तो आप रेशनल नंबर लोगे, ठीक है, रेशनल नंबर का मतलब रेशियो ऑफ इंटीजर ना। एक होल नंबर, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। होल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स, जीरो को भी इंक्लूड कर दो, राइट। अब दो दो होल नंबर को ऐड करते हो तो रिजल्ट भी होल नंबर आना चाहिए। तो यस, होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, लेकिन होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, आप देख सकते हो। लेकिन वेक्टर के केस में आपको सब्ट्रैक्शन तो करना नहीं है, आपको केवल एडिशन करना है। यू हैव टू ऐड टू वेक्टर्स, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय स्केलर कांस्टेंट, यू डोंट हैव टू, देयर इज नो बिजनेस अबाउट सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हम नंबर्स के केस में सारे ऑपरेशन चेक करते हैं, वी चेक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन वेक्टर के केस में आपको क्या करना है, वेक्टर स्पेस में अगर वेक्टर्स प्रेजेंट हैं, यू हैव टू ओनली ऐड टू वेक्टर्स, यू हैव टू गेट द रिजल्टेंट वन, ठीक है। और आपको यहाँ पर यू हैव टू मल्टीप्लाई लैम्डा टाइम्स सर्टेन वेक्टर, ओके ओके, एंड यू हैव टू टेक द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम, राइट। आई होप दिस मेक्स सेंस, ठीक है। So why we are taking linear combination of vectors, so that you can write any other vector, you can express any other vector as a linear combination of given vector. तो मतलब there, suppose there are three vectors and there is one more vector, right? So can you get that new vector by taking the linear combination of given vector? ये question आ सकता है। आप ax equal to b ले लो, ठीक है, तो can you write b as a linear combination of लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर ऑफ ए। तो आपको मेन वही सोचना है जो मैट्रिक्स लैंग्वेज है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जिसको आप समझ सकते हो, ओके। देखो एग्जांपल नंबर 2, now you will find that polynomial is also a vector space, guys. Polynomial is also a vector space, ठीक है। अब आपको लगेगा ये पॉलिनोमियल कैसे वेक्टर स्पेस हो सकता है। अब किसी को पॉलिनोमियल नहीं पता है तो दे कैन गो बैक टू देयर स्कूल एंड दे कैन क्लियर देयर कॉन्सेप्ट व्हाट इज पॉलिनोमियल। Polynomial is nothing but the algebraic expressions will be having many terms, okay, one term, two terms, three terms, four terms, like that, okay. So poly means many, okay okay. So remember, any algebraic expression you take, okay. So we will talk about polynomial space here, right? Polynomial space, polynomial space जिसको हम लोग डिनोट करेंगे Pn T over real, okay, real number R, right? So this polynomial space we will call it polynomial, is also you can consider as a vector space if it satisfies those three conditions. मतलब you can add two polynomials, you should get the same polynomial, I mean that polynomial should belong from the same set of whatever space you have considered, right? So let you write here, let, okay, so let P of n P, okay, denotes the set of all polynomial, denotes the set of, oh, there is some bug I believe, set of all polynomials, okay, of degree less than or equal to, okay, n. Degree is what, okay, any polynomial, like you take quadratic polynomial, so degree is 2, right? The highest power of the variable is called degree, right? That everybody knows. So P and T denotes the set of all polynomial of a degree less than or equal to n, right? So there is a n, highest power of the variable is going to be n, right? So the set of all polynomial, that is, you can take set of, okay, that is the set of all polynomial, okay, you can say pt is going to be, you can write here a naught a1t plus
Okay, you can take like this. I hope this makes sense, right? And you can say that as t to the power s, t to the power s. Okay, so this polynomial is given, right? It is a polynomial in t. Okay, it is a polynomial in t. The variable is t here, and what is the highest power of the variable? That is s, and that s should be less than or equal to n. What? That s should be here. This s should be less than or equal to n. Okay, and this ai, these coefficients should belong to the real number. Okay, that is the very important condition. So you can prove here. Okay, you can take another polynomial, you add it, right? And that coefficient should also belong to you know uh, coefficient should belong to the real set. Okay, and you can get it, right? If you multiply by any lambda, any scalar, okay, so you can get here, right? So this is nothing but what you can say, it is also vector space. तो ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा कि अरे पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ पॉलिनोमियल स्पेस कैन आल्सो बी द वेक्टर स्पेस. ओके, रिमेंबर पॉलिनोमियल कैन आल्सो बी द वेक्टर स्पेस. तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल स्पेस बोलते हैं. See, when you will look at the book like mathematics for machine learning and all, so you will get these kind of terms. तो आपको फिर वहां पर ऐसा नहीं लगेगा अरे सर ने तो बताया नहीं था. ठीक है, याद रखना. ये एक वेक्टर स्पेस का एग्जांपल आप बता सकते हो. अब तीसरा एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, तीसरा एग्जांपल है मैट्रिक्स स्पेस का. ठीक है, मैट्रिक्स स्पेस. मैट्रिक्स स्पेस इज आल्सो काइंड ऑफ वेक्टर स्पेस, यू कैन से, राइट? तो आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स दे आर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स, राइट? any okay, in any matrix there are many column vectors, right? That can be taken as a vector space provided they should satisfy the criterion which I have told you, right? Closure property, है ना? मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हो. जैसे आपके पास अगर नंबर है तो आप क्या क्या कर सकते हो नंबर के साथ? यू कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड. तो वेक्टर के साथ भी क्या क्या कर सकते हो, वो चीज याद रखना. ठीक है, तो मान लो कोई मैट्रिक्स एम आप लेते हो, एनी मैट्रिक्स यू टेक एम, एंड उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, राइट? ठीक है, ये मैट्रिक्स एम है, उसका ऑर्डर कितना है? एम क्रॉस एन. You can say there are m number of rows and n number of columns, or you can say number of equations are m, number of unknowns are n, right? So so what you can do here is this is a vector. If I am saying this is a matrix space, so if you take like set of all, right? Set of all m into n matrices, m into n matrices with element, okay, with elements from R. You have to keep in mind all the element of M. Okay, all the elements of M, you can say all the family of M should belong to the real number, right? Real space, you can say, right? So you take two matrices. Okay, I think you can add two matrices, right? How can you add two matrices? आपको पता होना चाहिए. So the after addition also, that whatever elements are coming, right? Whatever elements you will obtain, that should belong to the real, okay, real set. Okay, so that you can say that is a matrix space. तो आप कब दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो? अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हो, जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है, राइट? तो आप बोल सकते हो कि एक मैट्रिक्स आपका ए है ना? क्योंकि आफ्टर ऑल आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करना पड़ेगा. इफ दैट इज अ वेक्टर स्पेस, आई एम गिविंग यू द मैट्रिक्स स्पेस नेम बिकॉज टू बी स्पेसिफिक. ओके, दिस इज अ मैट्रिक्स. ओके, सो वी वांट टू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स. तो ये वेक्टर स्पेस ही है, बट यू कैन से मैट्रिक्स स्पेस. तो आपको ए मैट्रिक्स दिया रहेगा, ए मैट्रिक्स आप ले लो. जैसे लेते हैं A1 B1, A1 B1 C1, A2 B2. okay, sorry, just take D1 E1 F1, right? और आप बी मैट्रिक्स ले लो. बी मैट्रिक्स इज नथिंग बट A2 B2 C2, D2 E2 F2, right?
नाउ यू कैन ऐड दीज टू मैट्रिसेस, ए प्लस बी कर दो, ठीक है। तो अगर आप ए प्लस बी करोगे तो उसका भी ऑर्डर क्या आएगा, m बाई n ही आएगा, सेट ऑफ ऑल m n मैट्रिसेस, राइट। उसका भी ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर इज नॉट गोना बी चेंजिंग, राइट। अब लेमडा से मल्टीप्लाई करवाओगे तब भी उसका ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए दिस इज अ मैट्रिक्स स्पेस, राइट। लेमडा टाइम्स ए अगर करते हो तो वो भी उसका भी ऑर्डर m into n. So when you can add two matrices, that you have to keep in mind. When you can add two matrices, that you have to keep in mind, right? Please remember. ये तो आपका कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, you can see this is nothing but 2/3, this is 2/3, ये रिजल्टेंट भी 2/3 ही आएगा, राइट। दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। So as you move ahead in the vector space and subspace problem, you will see that, okay। और मैंने एक एग्जांपल कल आपको बता दिया था सॉल्यूशन स्पेस का, तो एग्जांपल नंबर 4 वाज सॉल्यूशन स्पेस। तो हमारा सॉल्यूशन अगर दिया है सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू 0, ओके, तो दिस फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, दिस फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, and that vector space we call it what? That vector space we call it null space, or we call it solution space. Okay, so I have given you the proof as well here, right? I have given you the proof as well, right? So I need not to discuss about again, right? Okay. So ax equal to 0 is what? Null space, or you can say the solution space. Sometimes we call it subspace as well, right? क्योंकि इसमें 0 0 जो होगा वो satisfy करेगा, तो 0 0 should be always present, right? ठीक है। So solution of ax equal to 0 forms a vector space. I think I need not to explain you, or we can take a quick look here. Suppose आप यहाँ पर लेते हो x1 आपका है जो it belongs to, you can say a vector space V, x2 is another vector, ये बिलोंग करता है सेम वेक्टर स्पेस से, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो, दैट शुड बिलोंग टू वेक्टर V, राइट। तो अगर आप यहाँ पर रखते हो, आपको पता है ax1 कितना आएगा, 0 आना चाहिए, ax2 should be 0, right? You take a matrix, multiply with the vector x1 because x1 belongs to V, okay, so you should get null vector, okay. Then if you add these two vector x1 plus x2, right, so you should get like ax1 plus ax2, right, and this will be 0, right, so it is satisfying. And if you take any lambda, multiply with x, so you should get what here, you should get 0 only, right? Please remember this, okay. You can say that this is nothing but a null space or a solution space. आपको पता है infinitely many solutions में, when I discuss infinitely many solutions, so you get one part. देखो infinitely many solution has two part, okay. Suppose any equation is given, it is a non-homogeneous system of linear equation. Non-homogeneous means right hand side is not gonna be 0, right? तो आपके पास दो पार्ट आते हैं सोल्यूशन के, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है, एक जनरल सोल्यूशन आता है, और वी कॉल इट होमोजीनियस सोल्यूशंस। तो व्हाट एवर कोफिशिएंट यू गेट, व्हाट एवर कंपोनेंट यू गेट इन दैट वेक्टर, आपको पता होगा लैम्डा टाइम्स व्हाट एवर, इफ यू टेक दैट यू नो component and you put back into the given equations, so that should satisfy what, right hand side should be equal to 0, है ना। तो नल स्पेस को सेटिस्फाई करता है, ये आप देख चुके हो पहले भी, राइट। और अगर मान लो गिवन इक्वेशन इटसेल्फ इज अ होमोजीनियस, राइट, तो नल स्पेस ही नल स्पेस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और मैंने सब स्पेस के बारे में बता दिया है, तो एक बार हम रिकॉल करेंगे सब स्पेस के बारे में। तो अच्छा एंड छत्री, यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट एवर एग्जांपल आई हैव गिवन यू, है ना। तो आपको ये समझना है, आपको क्वेश्चन में आएगा, अगर समटाइम्स व्हाट दे विल गिव यू, दे माइट गिव यू इन टर्म्स ऑफ सेट आल्सो, तो आपके पास सेट का नॉलेज होना चाहिए, आपको पता है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है ना। तो आपको पता है कि समटाइम्स व्हाट वी डू, टेक एलिमेंट, पुट कॉमा इन बिटवीन, राइट, एंड दैट इज अ फैमिली ऑफ
यू नो मेंबर विल बी देयर, राइट, उसको हम लोग सेट बोल देते हैं। एक इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, है ना, पहले कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका रिलेशन आगे लिख देते हैं, राइट, तो एक रिप्रेजेंटेशन है सेट का। तो पूछेगा ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, तो अगर 0 0 इंक्लूड नहीं है, 0 0 अगर इंक्लूड नहीं है तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। आप सीधा सीधा, मैंने आपको बताया था कि एक वन एग्जाम्पल इज इनफ टू डिस्प्रूव एनीथिंग, राइट। तो चलो ठीक है, देखो सब स्पेस, ठीक है, देखो सब स्पेस में व्हाट एवर ऑपरेशन यू हैव, यू वांट टू सेटिस्फाई इन केस ऑफ वेक्टर स्पेस, आपको सेम ऑपरेशन यहाँ भी सेटिस्फाई करना है। तो मान लो एक वेक्टर स्पेस है, लेट बी, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, ओके, you can say over R and let W, capital W, be a subset of V, be a subset of V। देखो बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी गाइस। अब ऐसा नहीं सोचना है कि अरे सेट तो क्लास 9th में पढ़ा था, ऐसा वैसा नहीं, नहीं, हर जगह आता है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज जो होती है ना, दैट लैंग्वेज मेक्स योर लाइफ डिफिकल्ट, राइट। और कंप्यूटर साइंस में तो आई थिंक बेसिक हमेशा ही रहता है, whether you do any sort of programming, I have seen, okay, I am not from computer science background, but as a learner, I am a continuous learner, okay, I am learning day by day everything. So I get to see, that whenever I see, if I have to write some code, if I have to solve some problem, I need to have some basic mathematics background, at least number theory should be clear, right। मुझे लगता है कि जिसको नहीं आता बेसिक तो कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कर लेते हैं, आजकल तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, राइट। बट रियल मशीन लर्निंग एआई के लिए तो आपको रियल मैथ आना चाहिए, ठीक है, वहां पर। इसीलिए आप देख सकते हैं इंडिया में या कि अक्रॉस वर्ल्ड, राइट, यू विल नॉट फाइंड many people who are transitioning from, you can say from software to data science or something, ऐसे नहीं ट्रांजिशन हो जाता है, ठीक है। लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर R एंड लेट W बी अ सबसेट ऑफ V, राइट। सो आप बोल सकते हो देन W is a subspace, then W is a subspace, okay। That day I told you this basic concept, right, is subspace is just like a subset of any complete set, you can say, right। Then W is subspace of V, okay। If W is itself W is itself a vector space, okay। What is the meaning of this? W is itself a vector space over R, इसका मतलब क्या है? W is a vector space means it should satisfy those operations, whatever operation we have discussed, means to whatever vectors you take and you can add, multiply by, okay, with respect to same operations, right, remember, with respect to same operations as, okay, in V, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। जैसे मैंने एक लाइन का एग्जांपल दिया था, वी टुक R2 प्लेन, राइट, R2 टू डायमेंशनल प्लेन, and when we were multiplying any sort of scalar multiplication being done with the vector, okay, तो आपको एक लाइन मिल रही थी, that line was a part of a plane, right। so that line was nothing but a subspace, ठीक है। हाँ, line should pass through origin, that was the criteria, ठीक है। so let V be a vector space over R and let W be a subset of that V, right। तो आप बोल सकते हो कि W is gonna be what, is going to be the subspace of V if W is itself a vector space, okay, with respect to same operation। same operation का मतलब वही है ना। so what are the criteria for identifying the vector subspace that you have to remember, ठीक है। criteria for identifying, the criteria for identifying subspace
Okay, so for we can consider here for vector u and v, okay, they belong to the w. Okay, w is a subset of the vector okay, w. Okay, u and v belongs to this vector space w, and lambda is basically a real number, right? You can say lambda. Okay, this is lambda. Lambda is nothing but a scalar value. Okay, you should have the knowledge about scalar, real number, all those things, right? So तभी आप okay, so following closure property you should satisfy. So following closure property, right? Properties should hold. Okay, I always teach without mentioning closure and all. ठीक है, लेकिन आपको समझना है ये क्लोजर प्रॉपर्टीज को कहते हैं. तो पहला क्या है, अगर मान लो u and v belong to w, so first is u plus v should also belong to w, right? And second, अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो लैम्डा से u में, that should also belong to w. That is what the main thing is. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप see if u and v belong to w, right? So if you add u plus v, right? So that should stay in the same space. मेरा कहने का मतलब है, ठीक है? After addition of u and v, they should stay in same space. इसका मतलब ये है, ठीक है? तो इजी लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप डर जाओ, है ना? ओके, और सबसे ट्रिवियल जो एग्जांपल है सब स्पेस का, आप 0 0 बोल सकते हो, राइट? ओके, आई होप दिस मेक सेंस. तो ट्रिवियल सब स्पेस ऑफ वेक्टर, ओके, ट्रिवियल सब स्पेसेस ऑफ a vector space V. Trivial means just, you know, the something which is very obvious, right? Where you don't need any sort of proof or something. Directly you can say, yeah, right? Obvious subspace, right? So अगर आपके पास plane है तो obvious subspace is, you can say, any line which is passing through origin, ठीक है? तो आप उसको बोल सकते हो. तो set 0 is a, the set 0 is going to be the subspace of the vector space. Okay, और दूसरा क्या हो सकता है, द होल सब होल सेट. ओके, होल सेट V itself. ओके, पूरा सेट को आप सब स्पेस बोल सकते हो, मैंने बताया भी था, आई एम नॉट रॉन्ग. एंड सेट you can say 0 vector is also a complete you can say is a part of subspace. तो these are the trivial subspaces. अगर कोई पूछता है कि वेक्टर स्पेस में what are the trivial subspaces, immediately कैसे बताओगे, आप बोल सकते हो सर 0 0 is one of the subspace that you can say, right? Or whole entire vector space is a subspace only, right? ठीक है, तो let me take some example here and let me talk about subspace. तो अच्छा है आपको ये सब समझ आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आई थिंक यू शुड नेवर फेस एनी चैलेंजेस कि अरे इसमें कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है? तो आप इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है? अब एग्जांपल हम लेंगे सब स्पेस के, ठीक है? एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1 अगर लेते हैं, मान लो आपके पास कोई u वेक्टर दिया, u दिया है सेट. ओके, अब देखो, अब आई एम गोइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ सेट. ओके, suppose u is given in terms of set, right? तो u is given in terms of set. ओके, सो अब आप बता सकते हो कि किस फॉर्म में दिया हुआ है. देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म्स होते हैं, मैंने आपको बताया, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म होता है, राइट? यस. सो u अगर दिया है यहाँ पर तो रिलेशन यहाँ मेंशन रहेगा पहले, जैसे a कॉमा b कॉमा c. ओके, these are the variables that we are using, a b c. okay, such that a equal to b equal to c, right? तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, that they have mentioned here, okay? that they have mentioned, a all these elements, okay, are equal here, a equal to b equal to c, ठीक है?
Okay, I hope this makes sense. So if this is a subset of R3, you can say, if this is a subset of R3, then you can say that this is going to be a subspace, right? Then you can say is a subspace of R3, right? Subspace of R3. What is the meaning of that? देखो, ये आप इसको वेक्टर ले सकते हो, जैसे ए बी सी लिखा है ना, तो आप इसको लिख सकते हो ए बी सी, राइट? तो ऑल दीज एलिमेंट्स कैन बी सेम, जैसे मान लो व्हेन वी राइट अल्फा टाइम्स 1 1 1, राइट? तो दिस कैन बी द वेक्टर स्पेस. आई थिंक दिस इज ओके, राइट? ठीक है. सो अगर सारे एलिमेंट्स यहाँ पर सेम है, सो यू कैन से या दिस यू इज अ सब स्पेस ऑफ R3, राइट? ये एक एग्जांपल है सब स्पेस का. अब देखो एक सब स्पेस, एक एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है? तो आपको पहचानना है कि वेदर ये पहली बात, वेदर इट इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट, राइट? तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, है ना? ये सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको एक बता दिया कि एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म होता है. रोस्टर फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप चेक कर लेना कैसा क्या होता है, ठीक है? नहीं आएगा तो फिर आई विल टेल यू आल्सो. सो सपोज एनी वेक्टर space is given, suppose any set is given, okay, and x1 comma x2 is there and they have some relation here, right? तो relation हमेशा बाद में मेंशन होता है, ठीक है? these are x1 and x2, okay, variables, and they belong to R2, you can say they belong to R2 vector space, okay? ये सेट है आपका R2 से बिलोंग करता है, ठीक है? such that x1 is greater than equal to 0, right? and x2 is also greater than or equal to 0. मतलब यहां पर क्या बोला है, ये x1 और x2 क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है? चलो, तो क्या ये वेक्टर स्पेस है क्या? डज V फॉर्म अ वेक्टर स्पेस? अच्छा है, प्लीज टेक अ लुक. डज V फॉर्म अ वेक्टर स्पेस? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डज V फॉर्म अ वेक्टर स्पेस? देखो x1 x2 दे बिलोंग टू R2, राइट? अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? x1 हमेशा पॉजिटिव होगा, x2 हमेशा पॉजिटिव होगा. मान लो हमारे पास एक x1 हम लेते हैं, लेट सॉल्यूशन, लेट x1 इक्वल टू 1 2, ठीक है? अब ये x1 क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? x1 इज अ वेक्टर, इट शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज, राइट? लेकिन मान लो अगर इसमें आप -1 से मल्टीप्लाई करवाते हो, ये क्या है? -1 -2, इज इट पॉजिटिव? ये पॉजिटिव अब नहीं है ना, क्योंकि यू आर फ्री, ओके, यू आर फ्री टू मल्टीप्लाई बाय स्केलर, एनी स्केलर, राइट? दैट स्केलर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ठीक है? तो जीरो तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन क्या माइनस हो रहा क्या? योर x1 कैन बी नेगेटिव हियर इन दिस केस. जो आपका v सेट दिया हुआ है उसमें नेगेटिव x1 नेगेटिव x2 आर नॉट अलाउड, राइट? ठीक है? लेकिन जो आप समझ सकते हो कि ये प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए. इफ दिस प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो ये आप बोल रहे हो कि ये एक वेक्टर स्पेस है, राइट? और कोई वेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन जब इसमें आप निगेटिव से मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये वेक्टर यहाँ आ जाता है, तो वी कांट से दिस इज अ वेक्टर स्पेस. यस, अच्छा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So this does not form a vector space, guys. Remember, this does not form a vector space. Please remember, this does not form a vector space. Okay. क्योंकि आप जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, that -x1 -x2 they should also be present here, but they are not allowed in this set, okay? Because क्वेश्चन में ही मेंशन किया है कि ये सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट अलाउड है, लाइक x1 should be always greater than 0, right? तो आप याद रखना कि this does not form a vector space because
you can say V is not you can say subspace of R2, right? Because minus times X does not belong to V. ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है ही नहीं, पहली बात. आई होप दिस मेक सेंस टू यू, राइट? ओके, फाइन. So these are the example that I have given you, right? So ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है. उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारे आज के टॉपिक हैं, न्यू कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करना है. हम बस आपको एक डेफिनेशन देंगे, वट एवर वी हैव द टाइम हियर, राइट? तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब थोड़ा सा आपको यू हैव टू सॉल्व मैनी एग्जाम्पल्स हियर डाउन. बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे, ठीक है, आपको सॉल्व करने हैं. जैसे मान लो कोई सेट दिया रहेगा, है ना, अब बोल दिया कि मान लो ऐसा v दिया है, x एंड y दिया है, इनके बीच का रिलेशन दे दिया कि रिलेशन इज x प्लस y शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट? अब बोलेगा ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, तो आप बोलोगे नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि ये 0 को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है. अगर आप x एंड y को 0 रखते हो तो 0 को इंक्लूड नहीं करते हो. तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में. मतलब आप मैथमेटिक्स का पेपर उठा के देखोगे जो गेट में आता है, तो वेक्टर स्पेस से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. आई एम टॉक अबाउट मैथमेटिक्स गेट पेपर. If you look at website of the gate exam, right? So you can check out, right? So because we are engineer, we don't care about these vector space, subspace, but when we are in doubt, when we are in need, okay, we need to follow that, right? अब हमें मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, we have to earn fat checks, fat salaries in future, right? So we have to beat around the bush, right? हमें तो अपना हेड ब्रेक करना ही पड़ेगा, ठीक है. अब आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो आप धीरे धीरे रेडी हो जाओ धीरज सर के साथ, राइट? अब देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, दैट इज नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. फ्रॉम द डे वन आई हैव बीन टेलिंग यू, राइट? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ओके, ठीक है. आपको याद रखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, राइट? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर. तो मैं आपको इन जनरल बता देता हूं कि मान लो आपके पास ax इक्वल टू b दिया हुआ है. अगर आप मैट्रिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और आप उससे ax इक्वल टू b फॉर्मेट में आप यू हैव रिटन, राइट? नाउ इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस दिस b, आई एम टॉक अबाउट दैट b व्हिच इज you can say suppose ax equal to b is there, okay. Okay, so after all this a is what? After all this a is nothing but v1, v2 and so on, so many, you can say vn, n number of vectors are there, right? Times, you can say times x, and this is b, right? Okay, जो भी डायमेंशन आप समझ सकते हो, तो यहाँ पर n number of vectors are given and their x is there and b. So if you are able to write this b as a linear combination of you can say as a linear combination of vector, okay, how can you write them? तो आप बोल सकते हो कि b can be written as x1 times v1 is nothing but what? v1 is nothing but x1 v1, okay, plus you can say x2 v2 and so on and so forth, right? Like this, ठीक है. तो आप बोल सकते हो कि इफ यू आर एबल टू राइट दिस b, राइट हैंड साइड b एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर ऑफ a, राइट, देन सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, ठीक है. तो हम पूछे, मैं व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आई विल आस्क इन द इंटरव्यू, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ax इक्वल टू b दिया हुआ है, तो कैन बी राइट एज अ लीनियर, b कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर ऑफ a. तो आप बोलोगे यस सर. कब बोलोगे? जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब, ठीक है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब, ठीक है. तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है. आप देखो लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे लिखते हैं. लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है आप एक वेक्टर लो, यू मल्टीप्लाई विद सम स्केलर कांस्टेंट एंड सम देम अप, दैट इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन, राइट?
तो इट्स अ वेरी इजी डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर हम मैट्रिक्स को देखेंगे, ठीक है। ax इक्वल टू b, तो एनी एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, एनी एक्सप्रेशन of the type lambda 1 x1, right, lambda 1 x1, or you can say lambda 1 v1, because just take v1 as a vector, lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus lambda 3 v3. So what we are doing here is we are multiplying by scalar constant with the vector, okay। स्केलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वेक्टर से और ऐड कर रहे हैं सबको, राइट, सबको ऐड कर रहे हैं, plus and so on, plus lambda n times vn, okay, where this lambda I should belong to what, real space, real number, right, this lambda, this scalar constant should be real number, is called what, is called the linear combination of uh, v1 v2 and so on, okay, vn, ठीक है। So कोई वेक्टर दिया रहेगा आपके पास, bunch of vectors, you can write them as a linear combination of, right, okay। So and if you're getting some new vector, right, if you're writing given vector, suppose 4 vectors are given and you are able to write them as a linear combination of column vector, right, so if you're getting some new vector, okay, so you can say there will be some sort of a solution, right, please remember this, ठीक है, ये बहुत important है, okay। So this definition you have to remember, right, yeah, ये people who belong from electrical background or electronics background, they always use these things, right, हर in entire discipline, आप believe ना करोगे, linear combination का यूज इतना आता है, क्या बताएं, they talk about Fourier series, they talk about many things, right, हर जगह linear combination का यूज है, ठीक है, आपको याद रखना है, okay fine। So तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, राइट, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, ठीक है, जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन या कुछ भी बात कर रहे हो, वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, ओके, दोज प्रॉपर्टी यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड। तो यहाँ इंपॉर्टेंट रिमार्क में आप याद रखना कि मान लो आपके पास कोई v वेक्टर है, दैट बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस v, राइट, okay, this vector space is nothing but vector space over r, okay, that real number you can say over r, okay, so is a linear combination, okay, is the linear combination of, okay, see some new vector v, you can say this is new vector v, small v, that also belongs to the vector space over r, is a linear combination of, you can say v1 v2 and so on vn, right, and so on vn, if there exist, okay, this is a symbol for there exist, okay, you can say if there exist, okay, or you can say just forget about this, if there exist scalar, okay, lambda 1 lambda 2 and so on lambda n, right, and that should also belongs to the real number r, such that you can write this small v, which is a new vector, okay, a small v you can obtain by taking the linear combination of v1 v2 v3, lambda 1 lambda 2 lambda n, these should be also there, right, so you can say that v can be written as lambda 1 v1 plus lambda 2 v2 plus lambda 3 v3 and so on plus lambda n vn, right, okay, this is very important to remember. Any vector can be written as the linear combination of another given vector, okay, so all vectors should belong from the same vector space, ये भी याद रखना,
ऐसा नहीं है कि कोई भी ओके। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो लेट मी टेक अ एग्जांपल हियर, क्योंकि एग्जांपल से समझना इज इम्पोर्टेंट हियर, राइट। और गेट में क्वेश्चन भी आ चुका है, ऐसा मत सोचना कि सर इज टीचिंग दिस कॉन्सेप्ट यू नो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एंड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो आपको पता है, इफ यू वांट टू गेट इनटू आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बैंगलोर, राइट, and if you want to have a base salary of 25 lakh, right, I'm talking about base salary, not CTC, right. So you have to become a problem solver, right. One of my student was telling me as well, right, sir, if somebody wants to get CTC more than 25 lakh, right, so he has to become a problem solver, and his linear algebra as well as the probability and statistics should be very good. ये आज की डिमांड है, आज की करंट डिमांड, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग बस से काम नहीं चलने वाला है, याद रखना। तो एग्जाम्पल्स में क्या होगा, मान लो आपके पास कोई x1 x दिया है, कोई एक वेक्टर दिया है, यू कैन से 1 3 4, राइट। दिस x वेक्टर इज गिवन 1 3 4, ओके। और देयर आर सम वेक्टर लाइक यू कैन से देयर आर अदर वेक्टर्स, like you can say e1 is given as 1 0 0, okay, e2 is given as 0 1 0, okay, and e3 is given as 0 0 1. Okay, so remember these are the standard we call it sometimes standard vector basis, okay, these are the standard basis, okay. We will understand what is the meaning of this basis, okay, but remember ये standard basis होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई एक x वेक्टर दिया हुआ है और ये वेक्टर e1 e2 e3 दिए हैं, तो कैन वी राइट दिस x एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गिवन वेक्टर e1 e2 e3? क्वेश्चन इज कैन वी राइट, can we write, can we express or write whatever, can we express x as a linear combination of e1 e2 e3, right? तो आप कैसे करोगे, you just take 1 2 3 here, right? देखो, अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है 1 3 4 ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में दिया है, तो आप यू कैन राइट देम एज अ कंपोनेंट, लाइक एज अ कॉलम वेक्टर 1 2 3, and then what you can do here is you can take 1 time 1 0 0 plus 2 times 0 1 0 plus 3 times, okay, 0 0 1, right? Yes. So आप देख सकते हो कि यहाँ पर lambda 1 lambda 2 lambda 3 की वैल्यू 1 2 3 है, ठीक है। Yes, we are able to write as a linear combination of them, right? So 1 times, you see, you can check, okay, 1 equal to what, 1 into 1 0 0, right? Yeah, 2 equal to yeah, that is also satisfied. So this can be written as a linear combination of column vector, right? So this is, yeah, you can say that x equal to 1 2 3 is a linear combination of okay, e1 e2 e3, okay, please remember this, okay. So guys, you have to remember one of the systematic way of अब जैसे वेक्टर्स दिए रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि whether this can be written as a linear combination or not, right? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तो स्टैंडर्ड वेक्टर है ये, स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आप जल्दी से बता दिए। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां आपको चीजें ऑब्वियस नहीं रहेंगी, ओके, नॉन ट्रिवियल आप फील कर सकते हैं, राइट। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देयर आर सम सिस्टमैटिक अप्रोच, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो what I'm supposed to do here is I will be taking up those things like systematic way of investigating or expressing, uh, you can say as a linear combination। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, याद रखना, सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ linear combination
Okay. Second one is we will talk about linear span. Third one is not, yeah, linear span you can say. Then we will talk about linear independence. Okay. And dependence as well. These are the key concepts that you have to understand. Then fourth one we'll talk about we will understand the spanning set, and then we will combine these two things, right? Linear independence and the spanning set. We'll talk about basis, and the last topic will be dimension, right? So with this you can say half of the linear algebra will be over, right? And there will be some important concept like LU decomposition and single value decomposition, SVD, and some miscellaneous topics. Okay, I need to talk still the basic concept of matrices like idempotent matrix, एक बार और skew symmetric matrix, Hermitian matrix, उसको हम लोग लास्ट में करने वाले हैं, तो आपका पूरा लीनियर अलजेब्रा खत्म हो जाएगा. तो यू कैन से दैट नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर और 3 to 4 लेक्चर वी कैन टेक, राइट? और फिर एक सेशन ले लेंगे PYQ में. ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आया ना? अच्छे एंड छत्री एंड अदर पीपल, राइट? यू गाइज एंजॉयड टुडे, मतलब कुछ तो समझ आया होगा ना? एंड कल के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट? PYQ. Okay, so is there any doubt? Let me know. If you have any doubt, please tell me. And please correct that, okay? Wherever we did kind of mistake, so please correct that, okay? Okay. Yes. Thank you so much, guys. We'll catch up